जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज के इस वीडियो में हम क्लासिकल या ट्रेडिशनल ट्रेजेडी और मॉडर्न ट्रेजेडी के दरमियान डिफरेंस की बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे। इसके अलावा इनके एलिमेंट्स को हम ट्रेजेडीज़ के जो एलिमेंट हैं जो दोनों में पाए जाते हैं उनकी भी बात करेंगे। इसके अलावा फीचर्स की भी बात करेंगे। और एक बात आपको और भी बता देते हैं कि आज की इस वीडियो में मैं उर्दू ट्रांसलेशन नहीं करने वाला। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जिन वर्डिंग के मीनिंग बताना लाजमी होंगे, मैं उनको डिस्कस लाजमी करूँगा। तो क्योंकि बहुत ही इजी वर्डिंग में ये असाइनमेंट लिखी हुई है, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ट्रेजेडी कैन बी डिफाइंड इन सिंपल वर्डिंग अ प्ले दैट हैज़ अ सैड एंड डिस्प्लिट एंडिंग। दोस्तों, डिस्प्लिट एंडिंग का मतलब होता है मायूस कुन अंजाम। Even both classical and modern tragedies have a tragic ending, but there are a number of differences between them. The main difference between classical and modern tragedy is that classical tragedies deal with unified plot with one noble or royal protagonist means hero. Some examples of classical tragedies include Oedipus Rex, Romeo and Juliet, Hamlet, Medea, Antigone and Prometheus Bound. दोस्तों, अब हम मॉडर्न ड्रामा और मॉडर्न ट्रेजेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं। Modern drama is essentially a drama of ideas rather than action. The stage is used by dramatists to give expression to certain ideas which they want to separate in society. Modern drama dealing with the problems of life has become far more intelligent than ever it was in the history of drama before the present age. Some examples of modern tragedies include Henrik Ibsen's A Doll's House with its critical view of marriage, George Bernard Shaw's Major Barbara with its debate about capitalism and charity, and Eugene O'Neill Long Day's Journey into Night with its weathering semi-autobiographical examination of familial conflict. Henrik Ibsen is famously known as the father of modern drama. दोस्तों, अब हम इसके कुछ फीचर्स, फंक्शन, करेक्टरिस्टिक्स की बात करने जा रहे हैं जो दोनों किस्म की ट्रेजेडीज़ में पाए जाते हैं, और दोनों में इन एलिमेंट्स में फ़र्क क्या है, इनको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस एलिमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें शामिल है करेक्टर्स। Classical tragedies typically have one main character, whereas modern tragedy may have more than one central character. Protagonist. Protagonist दोस्तों हीरो को कहते हैं। Protagonist is typically from a wealthy noble or royal family in classical or traditional tragedies, while in modern protagonist usually has a common middle class background. Nature of the protagonist. In traditional drama, the protagonist is usually a noble and heroic character, but has a tragic flaw, and in modern tragedy, the protagonist may be a white, black, or grey character. Classical tragedy is the imitation of a single action in which a hero of high status falls from fortune to misfortune. The fall must occur because of a tragic flaw or some error or shortcoming in an otherwise good protagonist, and not by vice or depravity. Plot. The plot of modern drama does not always follow a strict plot. The plot of modern drama does not always follow a strict structure and might end without a clear resolution, while traditional drama usually stuck to a five-act structure. Modern drama can vary from 3 to 8 acts. दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्लॉट था ना, पिछले जो क्लासिकल ट्रेडिशनल ट्रेजेडी होती थी उसमें 5 एक्ट मस्ट होते थे, और ये जो मॉडर्न ट्रेजेडी होती है इसमें हम 3 से 5 और 8 एक्ट तक भी जा सकते हैं। टाइमलाइन. Classical tragedies have one time span, whereas modern tragedies have more realistic time spans. There are breaks and flashbacks. तो दोस्तों, यहाँ पर जो बताया गया है कि जो क्लासिकल ट्रेजेडी होती थी वो किसी एक ही टाइम को रिप्रेजेंट करती थी, किसी एक ही एज को, और थोड़ी जगह को वो कवर करती थी। लेकिन जो मॉडर्न ट्रेजेडीज़ हैं इसकी जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये टाइम स्पैन से भी बाहर होता है। इसमें फ्लैशबैक वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। मींस
कि हम जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसका इस्तेमाल करते हैं इन मॉडर्न ट्रेजेडीज में। स्टोरी, द स्टोरी इज अबाउट नोबिलिटी और रॉयलिटी, their ambitions attempts to unify or save a kingdom extra. The modern story is about ordinary people and their problems, ambitions, and aspirations. Thus, the stories are more realistic. Elements, classical tragedies typically contain elements such as hybris, hamartia, and catharsis. Modern tragedies use elements like irony and sarcasm. दोस्तों sarcasm का मतलब होता है लान तान करना या बुरा भला कहना. Fate and divine power. Fate and divine power are important elements in classical tragedies. Fate and divine power have less importance in modern tragedies. They are more concerned with realistic common problems. Realism. Realism is the most significant and outstanding quality of modern drama. The dramatists of the earlier years of the 20th century were interested in naturalism, and it was the endeavor to deal with real problems of life in a realistic technique to their plays. Conclusion. We can conclude that tragedies serve to present moral lesson, entertain audience, or both. Historical speaking, audience have loved tragedies, and the dramatic genre continues to be popular in our contemporary times. Tragedy function to provide audience with a sense of catharsis, which gives us a sense of relief of pent up emotions.